स्टूडेंट्स, पहले तो मुबारकबाद, आप बगैर इम्तहान के नई क्लास में आ गए। आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। बाकी बातें पेपर पैटर्न के बाद तफसील के साथ की जाएगी। सेकेंड ईयर मैथ्स में फर्स्ट ईयर का अगर थोड़ा बहुत भी याद है आपको, तकरीबन मिलता जुलता ही है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, कंपल्सरी क्वेश्चन। MCQs, 20 marks। जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई खास तैयारी तो नहीं होती। पूरे लेक्चर्स आपके पास अप टू डेट होंगे, तैयारी करते रहेंगे, MCQs की तैयारी साथ साथ होती रहेगी। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसमें 3 सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन नंबर 1, ये कहलाता है ज्योमेट्री। इसमें स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 2, the general equation of a straight line, chapter 3, and vector algebra, chapter 9। ये है फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन बी। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 होगा। टोटल 5 पार्ट्स होंगे। फाइव पार्ट्स में से आपको 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट यानी 3।
उसके बाद है सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ये भी ज्योमेट्री ही है। आप इसे कोनिक्स कह सकते हैं। कोनिक्स कहने की वजह, तो इसमें आपने पार्ट्स ऑफ कोन पढ़ने होते हैं। एक तो होगा सर्किट, चैप्टर नंबर 7, और दूसरा है पैराबोला, एलिप्स, एंड हाइपरबोला। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। इसमें क्वेश्चन 3 बनेगा। क्वेश्चन 3 में भी 5 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको इसमें भी 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, यानी 3 पार्ट्स। आपने क्वेश्चन 2 में से 3 पार्ट्स अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 5 पार्ट्स। क्वेश्चन 3 में से भी 3 पार्ट्स अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 5 पार्ट्स। अब आइए सबसेक्शन 3। सबसेक्शन नंबर 3 ये है बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें पहला चैप्टर होगा फंक्शंस, एंड लिमिट्स। चैप्टर नंबर 1, डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 4, and application of differential calculus.
Application of differential calculus, chapter 5. इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। इसमें भी 5 पार्ट्स and out of 5 parts attempt any 3 parts. यानी सेक्शन बी में जो 3 सब सेक्शंस थे, सेक्शन 1 इसमें 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, एक और चैप्टर नंबर 9 वेक्टर अलजेब्रा, 3 चैप्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 बना था, 5 पार्ट थे, 3 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने थे। सब सेक्शन 2 कोनिक्स, इसमें 2 चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 5 पार्ट्स होंगे, इसमें भी आपने 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। और थर्ड सबसेक्शन में 3 चैप्टर्स, फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर 1, डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 4 एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 पार्ट्स होंगे और कोई से 3 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट किए। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो सेकंड यानी सेक्शन बी में क्वेश्चंस थे, टोटल पार्ट्स थे 15 और 15 में से आपने अटेम्प्ट किए 3 पार्ट फ्रॉम ईच सबसेक्शन। अगर टोटल आपको करने होते हैं 10, इसका मतलब एक एडिशनल क्वेश्चन आपने और करना होगा, या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में से अटेम्प्ट करेंगे या 3 में से, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में से। अगर फर्ज करें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल पार्ट, उसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने 4 पार्ट्स अटेम्प्ट किए और 3 में से 3 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 पार्ट्स। इस तरह से आपके टोटल पार्ट्स होगा 10, हर पार्ट के 5 मार्क्स, तो 50 मार्क्स सेक्शन बी। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन सी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन, इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपल्सरी होगा, इसमें चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, नाम है इसका एंटी डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 वो डिफरेंशिएशन थी,
ये एंटी ऑफ डिफरेंशिएशन समझ लें, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स। इस क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 16। बाज़-औक़ात इसमें 6 पार्ट्स दिए जाते हैं, 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। बाज़-औक़ात 5 पार्ट्स दिए जाते हैं, 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। और बाज़-औक़ात 4 ही दिए जाते हैं, सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 4 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, टोटल 6 भी हो सकते हैं। ये सिर्फ चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, इसके अलावा किसी में से। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें चैप्टर बाकी सारे आएंगे सिवाय चैप्टर नंबर 6 के। बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं। आमतौर पे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट अटेम्प्ट करना। बहरहाल क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 14 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के भी 14 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 14 मार्क्स ही, यानी सेक्शन सी में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, इसके 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इनमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके 40 मार्क्स। इस तरह से सेक्शन सी के टोटल मार्क्स होगा 30। सेक्शन ए कंपलसरी था, 20 एमसीक्यूज 20 मार्क्स। सेक्शन बी में 3 सब सेक्शंस थे, और इन 3 सब सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स आपको बताया जा चुका है। तो आपने 10 ओवरऑल पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 15 पार्ट्स, जिसमें से हर एक सब सेक्शन में से कम 3 जरूर अटेम्प्ट करना। और सेक्शन सी ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन, इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा। इसमें इंटीग्रेशन यानी चैप्टर नंबर 6 या एंटी डेरिवेटिव 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, 14 मार्क्स। इस तरह से 30 मार्क्स। सेकेंड ईयर का मैथ्स, उसके बारे में कुछ बुनियादी बातें अब आप देख लें। पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट ईयर का मैथ्स उससे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ईयर का मैथ्स थोड़ा सा बोरिंग मैथ्स था, लेकिन सेकेंड ईयर का मैथ्स इंटरेस्टिंग। सारे ही टॉपिक्स अप्लाइड टॉपिक्स हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपका काम सही हो जाएगा। अब आपने काम क्या करना है, अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 2 से। आज तो मैं आपको फॉर्मूला ही लिखवाऊंगा। नेक्स्ट टाइम आप अपने पास एक किताब भी रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप स्क्रीनशॉट तो लेके सेव कर ही लेंगे, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं तो वो स्क्रीनशॉट बेचारी ज़ाया ही हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर लेने के बाद टाइम ज़ाया किए बगैर आप वो सारा काम अपने रजिस्टर में लिखें। इंशाअल्लाह ताला जब प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी तो वो रजिस्टर में देख। तो पहली बात तो मैंने बताई कि सेकेंड ईयर का मैथ्स इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि भाई फर्स्ट ईयर के मैथ्स के मुकाबले में कम अज़ कम डबल तो ज़रूर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स फर्स्ट ईयर में जितने भी थे उसको आप मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो अचीवमेंट तकरीबन बराबर हो जाएगा।
आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर के मैथ्स में बेहतर परफॉर्म करें तो एक तो काम पेंडिंग में नहीं डालना। दूसरा, सेकेंड ईयर के मैथ्स में खराबी सिर्फ एक छोटी सी है कि टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। आप पहला टॉपिक छोड़ के दूसरा टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते, पहले दो टॉपिक छोड़ के तीसरा टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि इसमें काम पेंडिंग में ना डालें। आसान है, इंटरेस्टिंग है, मगर डिसिप्लिन दे रहे हैं। अगर कोई पढ़ेगा तो उसको फायदा होगा। काम पेंडिंग में डालेंगे तो जाहिर सी बात है मैथ्स के साथ मजा नहीं चलता। अब आइए, फर्स्ट ईयर के मैथ्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के मैथ्स में फॉर्मूले जितने भी आपने पढ़े थे वो सारे बार बार इस्तेमाल होंगे। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि सारे फार्मूले, खास तौर पे ज्योमेट्री के फार्मूले, वो आप एक लिस्ट बना लें और उनको रिवाइज करना शुरू कर दें। इसके अलावा 360 डिग्री का टेबल जो ग्राफ बनाने में आप लोगों ने इस्तेमाल किया वो भी आपको याद होना चाहिए। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। यानी फर्स्ट ईयर के मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे एज सुन एज पॉसिबल आप रिवाइज करें। हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन। इसमें पहली चीज है, पहला फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला। फर्ज करें एक पॉइंट है P1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। फर्ज करें एक और पॉइंट है P2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। आप अगर P1 और P2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग P1 एंड P2, ये अगर फाइंड करना चाहें तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2, it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. P1 P2 mod means distance equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. For example, you are given 2 points P1 1, 2 and P2 3, -4। आप अगर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 फाइंड करना चाहें तो P1 P2 डिस्टेंस it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब P1 फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। फर्स्ट पॉइंट P1, x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2। सेकंड पॉइंट P2, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -4। ये वैल्यूज पुट कर दें। x2 is 3 minus from formula x1 is 1 whole square as it is plus y2 it is equal to -4 minus y1 is equal to 2 whole square। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 - 1 2
whole square plus minus 6 whole square. It is equal to the square root of 4 plus 36. It is equal to the square root of 40. आप इसे लिख सकते हैं square root of 2 multiplied by 2 multiplied by 10. ये पेयर बन गया, ये विदाउट पेयर, इसे आप लिख सकते हैं 2 square root 10 units. ये सिंपल हमने P1 और P2 की वैल्यूज लिखी थी. तो अगर वैल्यूज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, फॉर एग्जांपल P1 is A plus B comma A minus B and P2 is A minus B comma A plus B. अब ये हो गया P1 X1 Y1, P2 ये हो गया X2 और ये Y2. The distance between P1 and P2, it is equal to the square root of, again, X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square. वैल्यूज पुट कर दें, X1 Y1 ये P1 से रिलेटेड और X2 Y2 ये P2 से रिलेटेड. तो P1 A plus B कॉमा A minus B था, इसका मतलब X1 is equal to A plus B and Y1 is A minus B. P2 था A minus B कॉमा A plus B, इसका मतलब X2 is A minus B and Y2 is A plus B. तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, A minus B is the value of X2 minus X1 is equal to A plus B whole square plus Y2 is A plus B minus Y1 is equal to A minus B whole square as it is. माइनस से मल्टीप्लाई करें, साइन जाहिर सी बात है चेंज हो जाएंगे. A minus B as it is, minus A plus into minus minus B whole square plus A plus B माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस A माइनस इंटू माइनस प्लस B होल स्क्वायर. अब ये प्लस A माइनस A कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस A माइनस A कैंसिल. तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 2B होल स्क्वायर प्लस 2B होल स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस 2B होल स्क्वायर मीन्स 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर. It is equal to the square root of 8B square. It is equal to 2 square root 2 times B. ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स P1 एंड P2. अब यहाँ एक चीज और दिमाग में रखें, तो अगर फर्स्ट करें पॉइंट्स A और B हैं, आप AB अगर फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस, तो A फर्स्ट पॉइंट X1 Y1, B सेकंड पॉइंट X2 Y2. और अगर B A डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो B फर्स्ट पॉइंट X1 Y1, A second point X2 Y2.
तो मेरा ख्याल में कल तक आप फार्मूला तो हमने आपको बता दिया है। कल तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए, और कल से प्रॉपरली हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।